Why are you having a swelling on your lip? Hi, I'm Dr. Shreya Krishna, your trusted oral and maxillofacial surgeon from New Delhi. इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगी what are the various reasons जिसकी वजह से आपके लिप पे swelling आ सकती है and what are the various treatments you have to manage this. So, जो हमारे लिप का जो स्ट्रक्चर होता है it is made up of at least 4 layers. There is skin on the outermost side. There is some loose tissue which is in between the skin, which is the second layer. Then there is a lot of muscle in our lip, जिससे हमारे lips move होते हैं, we are able to talk. So this third layer is also very important layer. The fourth layer is in between the inner mucosa of the lip and the muscle is an additional layer where there are lot of salivary glands, यानी कि gland जिससे हमारा saliva यानी कि थूक produce होता है. So and the innermost layer is the mucosa, the light pink colored lining that you see all around your mouth, which is called the mucosa of our lip. So swelling on the lip can arise due to abnormality in any of these structures. So मैं आपको most common reasons बताऊंगी for lip swelling and how we manage them. So the most common swelling which can happen on your lip is actually something which starts over very short duration. That means हो सकता है कुछ घंटों में आपको ऐसा लगे कि आपका लिप स्वेल अप हो गया है या मे बी आवर्स और मे बी 1 or 2 days. This kind of lip swelling, when it is painless, it is reddish and it is of very short duration, is called angioedema, which is an allergic reaction of your body to any foreign substance. हो सकता है आपने कुछ ऐसा फूड खाया हो जिससे आपको एलर्जी हो गई हो, कोई ड्रग खाया हो, कोई चीज इनहेल की हो या कुछ कॉन्टैक्ट लगाया हो ऑन योर स्किन, ऑन योर लिप. So the first and the most common kind of lip swelling is allergic lip swelling or angioedema of the lip. The second most common type of lip swelling that we see is due to an infection. Now any infection of that arises from within our mouth, which can be because of our front teeth. अगर कोई भी uncontrolled swelling रह जाए, आपके दांतों में कोई इन्फेक्शन हो गया हो, वहाँ पे पस बन गई हो, एब्सेस बन गया हो, and if we leave it untreated, ultimately it is the same connective tissue which is going to the lip, so that can also swell up. So the second most common reason is an unattended tooth infection or an odontogenic cause of infection. The third is अगर आप अपने लिप के इनर साइड पे देखेंगे, कभी कभी एक स्वेलिंग हो जाती है which we call a mucocele. That swelling is happening because of habits like lip biting या accidental lip biting, जिससे हमारे जो salivary glands हमारे लिप के टिश्यू के अंदर होते हैं वो रप्चर हो जाते हैं एंड इंस्टेड कि हमारा सलाइवा नॉर्मल अपने ट्रैक से बाहर आ रहा है, वो कहीं ना कहीं कट जाता है एंड सलाइवा पूल हो जाता है विद इन द टिश्यूज. ये बलून बन जाता है, इसको कहा जाता है म्यूकोसील. इट इज अ वेरी वेरी कॉमन कंडीशन एंड इट इज द थर्ड मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ लिप स्वेलिंग दैट वी सी. द फोर्थ मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ लिप स्वेलिंग इज ऑफ वैस्कुलर ओरिजिन. सो स्पेशली बहुत कॉमन होता है इन किड्स एंड एडोलेसेंट्स. हमारे जो लिप में ब्लड सप्लाई होता है, वो जो हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं उनका कभी कभी ट्यूमर हो जाता है, which can be called hemangioma or vascular malformations. ये भी लिप में कॉमनली देखा जाता है. लिप उस एक एरिया में बहुत swollen up लगता है, रेडिश लगता है, जो सरफेस होता है वो इरेगुलर लगता है. These are vascular malformations or hemangiomas of the lip, and the fourth most common kind of lip swelling that we see. And the fifth kind of lip swelling that we see is of course it is the various kinds of tumors of the lip. Now they are not very common, but definitely lip tumors are also being seen more and more commonly now that habits like smoking and alcohol have increased in our younger population definitely. So because हर टाइप की स्वेलिंग का कारण अलग है,
hence treatment is also different. Just to give you a very brief idea, the first kind of lip swelling जो हमारी allergic होती है can be very easily managed by medications alone. जिसमें हम अगर एंटी एलर्जिक्स आपको प्रिस्क्राइब करें देन द स्वेलिंग इज डेफिनेटली करेक्टेड. द सेकंड जो लिप स्वेलिंग आपको बताई थी दैट वाज इन्फेक्टिव, कोई टूथ इन्फेक्शन है. सो इफ द टूथ इन्फेक्शन इज करेक्टेड, इफ इट्स अ स्मॉल इन्फेक्शन देन बेसिकली बाय एंटीबायोटिक्स. If the tooth needs some other kind of treatment, then definitely वो tooth का infection ठीक करने से हमारा lip का swelling भी ठीक हो सकता है. Third is salivary gland का जो mucocele बन जाता है. This cannot be corrected by medications alone. Definitely हमें वो छोटा सा बहुत ही minor kind of surgery करके we need to remove the mucocele. Vascular malformations of the lip, which were the fourth type of lip swellings I discussed. Sometimes they can reduce in size by some kind of injecting from some kind of drugs like fibrosing agents. And कुछ swelling ऐसे होते हैं बहुत ज़्यादा lip को disfigure कर देते हैं. उन cases में we do need to do surgery. And of course lip tumors are mostly always corrected by surgical intervention. So if you are having a lip swelling, please come and show it to your oral and maxillofacial surgeon. Get to the root cause of the swelling so that it can be treated.